Good morning. Uh, Once again, we are back on Ssc-Cgl live class, YouTube live class. My name is Rahul, and today we will continue and finish the idioms part, right? And today we will start off with, we did 25 yesterday. Today we will start off with the 26th idiom. 26 is 26 is to walk on. This is a nice idiom which you can use and which is a nice idiom. To walk on eggshell. इसका मतलब क्या है? To walk on eggshells. अभी eggshells जो हैं, राइट, अंडे का जो बाहर का कवरिंग है जिसके अंदर में उसका यॉक और एल्बुमिन रहता है, राइट, वो बहुत ही सॉफ्ट होता है. इसीलिए हम जब अंडे खरीद के लाते हैं दुकान से तो हम बहुत सावधानी से उसको लेके आते हैं. तो वॉक ऑन एगशेल्स इसका मतलब टू बी एक्सट्रीमली cautious about one's word or action. To be extremely cautious about one's word or action, right? So इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे. What is the example? The principal has a bad temper. So the students walk on eggshells in his presence. प्रिंसिपल जब क्लास में आते हैं या असेंबली में रहते हैं, राइट, तो स्टूडेंट्स जो हैं दे वॉक ऑन एगशेल्स. मीन्स वो बहुत कॉशियस रहते हैं. कुछ इधर उधर करने से प्रिंसिपल उनको डांटेंगे, राइट, शायद पनिशमेंट दें. सो द प्रिंसिपल हैज़ अ बैड टेम्पर. सो द स्टूडेंट्स वॉक ऑन एगशेल्स इन हिज प्रेजेंस. वो जब रहते हैं, द स्टूडेंट्स आर वेरी वेरी कॉशियस अबाउट देयर वर्ड्स और एक्शन, राइट. सो इसको हम वॉक ऑन एगशेल्स यूज करते हैं. और एक हम सेंटेंस यहाँ पर एक ट्राई कर सकते हैं, राइट. When the boss asks about the performance to his juniors, they walk on eggshells. यानी वो बहुत सावधानी से जवाब देते हैं. दे वॉक ऑन एगशेल्स. वो बहुत सावधानी से जवाब देते हैं. 27th is a nice one and an easy one. 27. Without a care in the world. Without a care in the world means without worrying is struggling to make a decent
earning during this pandemic. The wife is spending huge amounts in shopping and seems to have an attitude of without a care in the world. जबकि हस्बैंड का अभी काफ़ी स्ट्रगल चल रहा है, राइट, वो डिसेंटली अर्न नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक, राइट, उनका शायद अपना काम चला गया है, राइट. सो उस जगह पे द वाइफ इज, राइट, स्पेंडिंग अ ह्यूज अमाउंट इन शॉपिंग, right, and seems to have an attitude of without a care in the world. Seems to have an attitude of without a care in the world. कुछ फर्क नहीं पड़ता जो भी है, right. So this is the second one. 28 is once again और एक nice idiom है, worth your weight in gold. अभी इस इडियम को पढ़ के शायद আমাদের মনে হতে পারে যে সেই আগেকার দিনে হতো যে একদিকে লোকটাকে বা মহিলাকে বসানো হতো আর একদিকে সোনা বা রূপো দিয়ে ওজন করে সেই সোনা বা রূপো ডাউরি হিসেবে বা যৌতুক হিসেবে দেওয়া হতো, রাইট. বাট দিস ইডিয়ম ডাজন্ট মিন দ্যাট. worth your weight in gold is not weighing you against gold, राइट. এই ইডিয়মটার মানে, इसका मीनिंग है very useful or valuable, very useful or valuable, right. This idiom means very useful or valuable. Okay, example is we can't lose our team leader. He is worth his weight in gold. We can't lose our team leader. He is worth his weight in gold. Means the team leader is very, very valuable. The team leader is very, very valuable in the team, right. So this is called worth your weight in gold. Okay. "29, a funny idiom. A funny idiom. Barrel of love. Barrel of love means हंसी भरती, right, right. Someone who is extremely funny. Someone who is extremely funny.
is called a barrel of love. यानी जिसको देख के कभी भी हमें बहुत हंसी आता है। ऐसे लोग हमारे दोस्त यार में होते हैं, रिलेटिव्स में कुछ लोग होते हैं जिसको आते ही हमें हंसी आता है, वो कुछ बोले ना बोले पहले हमें हंसी लगता है, राइट? सो सच अ पर्सन इज कॉल्ड बैरल ऑफ लव। एग्जाम्पल क्या होगा? आई ऑलवेज हैव so much fun when Rajiv is around. He is literally a barrel of love. He is literally a barrel of love. Right? वो राजीव जो है मेरा दोस्त, वो आते ही बहुत हंसी आता है, बहुत मज़ा लगता है, राइट? सो ही इज लिटरली अ बैरल ऑफ लव. ओके, द 30th one is old as the hills. Old as the hills. अभी ये कंपैरिजन है, राइट? वी समटाइम्स से old as the monument, old as the hills, right? So old as the hills is दुनिया में in this planet, right, has been there for millions of years, right? So old as the hills, this idiom means someone, right, or something which is very old. Someone or something which is very old. The idea, example is the idea of working together in a team is as old as the hills. The idea of working together in a team is as old as the hills. कि ये टीम में काम करने का जो आइडिया है, ये तो बहुत ही पुराना आइडिया है, राइट? एंड इट इज एज ओल्ड एज द हिल्स, राइट? 31 is a little different type of idiom, right? In the doghouse. In the doghouse. Now, ये पढ़ के जो हमें लग रहा है তা আমরা পড়ে বুঝতে পারছি, তার সাথে কিন্তু ইডিওম্যাটিক এক্সপ্রেশনটার কোনো রিলেশন। ইন দ্য ডগ হাউস পড়ে আমরা এটাই বুঝতে পারছি যে বোধহয় কোনো কুকুরের যে থাকার জায়গা থাকে সেইখানে কোথায় কেউ গেছে, ইন দ্য ডগ হাউস। নো, দ্য ইডিওম্যাটিক এক্সপ্রেশন ইজ টু হ্যাভ সামওয়ান unhappy with you. To have someone unhappy with you, right? Now, how do you form a sentence? That's important. इसको use करके how do you form a sentence? I am in the doghouse with my wife for being there in the late night party.
my wife, right, she's not happy with me, okay, because I attended a late night party, और इसीलिए I am in the dog house. So I am in the dog house, right? So she is unhappy. My wife is unhappy, right? My wife is unhappy with me. So I'm in the dog house with my wife for being there in the late night party. Next is up for grabs. Usually न्यूज़पेपर में हम इसको काफ़ी बार देखते हैं, राइट, स्पेशली इन द बिजनेस स्पीच. अब इसका एग्जांपल मैं आपको दूंगा तो आपको समझ में आएगा. अवेलेबल फॉर एवरीवन, अप फॉर ग्रैब, अवेलेबल फॉर एवरीवन, राइट. एग्जांपल इज laptop computers at hefty discount is up for grabs in the Reliance digital stores. Right. At hefty discount. इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि रिलायंस डिजिटल स्टोर्स में तो लैपटॉप कंप्यूटर्स मिलता ही है, मगर अभी उन्होंने एक ऑफर दिया है, बहुत ही एक भारी डिस्काउंट ऑफर दिया है, ऑलमोस्ट 30-40% का डिस्काउंट ऑफर है, एंड इट इज अप फॉर ग्रैब. इट मीन्स दैट इट इज अवेलेबल फॉर एवरीवन. सबके लिए ये डिस्काउंट अवेलेबल है, कोई भी जाके ग्रैब. ग्रैब मीन्स टू कलेक्ट. ग्रैब मीन्स टू कलेक्ट, यानी इट इज अप फॉर ग्रैब द लैपटॉप कंप्यूटर्स, so it is available for everyone. So it's up for grabs. Split hairs. अभी सही मायने में आप थोड़ी ना एक सिंगल बाल को उसको आप फाड़ के दो बना सकते हो. एज इट इज वेरी वेरी थिन, राइट. स्प्लिट हेयर्स जो लिटरली मीनिंग हम देख रहे हैं, लिटररी मीनिंग जो हम देख रहे हैं, इट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट द इडियोमैटिक मीनिंग इज. तो आपको याद रखना पड़ेगा, राइट. दिस मीन्स आर्ग्यू और वरी अबाउट स्मॉल डिटेल्स, राइट. Argue or worry about small details. Example, if we keep splitting hairs on every step, we will not be able to start the new business at all. If we keep splitting hairs on every step, we will not be able to start the new business at all. अगर हम छोटे छोटे चीज़ों के ऊपर, यदि छोटे छोटे जिनिसের উপর আমরা
কন্টিনিউয়াসলি নিজেদের মধ্যে আর্গুমেন্ট, নিজেদের মধ্যে ডিফারেন্স অফ ওপিনিয়ন বা সেটাকে নিয়ে খুব বেশি চিন্তা করতে থাকি, তাহলে পরে তো আমরা বিজনেসটা স্টার্টই করতে পারবো না। We have to start a business taking some amount of risk, right? Taking some amount of things into consideration कि ठीक है, अभी जो हो रहा है आगे जाके उसको देख लें, सारा चीज को हम इकट्ठा करके ठीक से बना के हम नहीं कर सकते, राइट? नथिंग इज फुल प्रूफ, कोई भी चीज फुल प्रूफ नहीं होता है। 34 इज round the bend। राउंड द बेंड एक अजब इडियम है। राउंड द बेंड इज एक अजब इडियम। यूजुअली क्या होता है, हम राउंड द कॉर्नर सीख के आए हैं, हम राउंड द कॉर्नर सीख के आए हैं, और राउंड द कॉर्नर में हम देखे थे कि उसका मीनिंग है जस्ट अबाउट टू कम, पास ही में, राइट? जस्ट अबाउट टू कम और जस्ट वेरी नियर। बट राउंड द बेंड जो इडियम है, इसका मीनिंग कंप्लीटली अपोजिट है। इसका मीनिंग है क्रेजी और इंसेन, क्रेजी और इंसेन। नाउ इसका एग्जाम्पल कैसे सेंटेंस में हम डालेंगे, लेट्स सी हाउ वी पुट इट इन द सेंटेंस। द प्रेशर of her business, the pressure of her business made her go round the bend, made her go round the bend means यहाँ पर go round the bend, which means made her go insane, crazy. There's huge pressure in her business, so she is not being able to handle it with a cool and calm mind. So the pressure of her business made her go round the bend, made her go round the bend. Thirty-five is ball in, ये शायद आप लोग सुने होंगे, you might have heard it, right? Ball in your court means it is now your responsibility it is now your responsibility, or it is now up to you, it is now up to you, ball in your court. Example, now that autonomy has been given to the department, the ball is in their court to prove that the department functions smoothly. Now that autonomy has been given to the department, the ball is in their court. The ball is in their court to prove
that the department functions smoothly. এখন ওই ডিপার্টমেন্টের রেসपॉन्सिबिलिटी, वो अभी उनके ऊपर है, वो डिपार्टमेंट को कैसे चलाएं, बिकॉज राइट उनको ऑटोनॉमी दिया गया है। नेक्स्ट इडियम देखते हैं 36, राइट। बी ग्लैड टू सी द बैक, ये एक कंफ्यूजिंग इडियम है, ये एक कंफ्यूजिंग इडियम है। जस्ट लाइक राउंड द बेंड, राउंड द बेंड मतलब टर्निंग से राउंड, बट उसका मीनिंग हमने देखा राउंड द बेंड का कि वो इट मीन्स द इडियोमैटिक एक्सप्रेशन इज क्रेजी और इंसेन, द इडियोमैटिक एक्सप्रेशन इज क्रेजी और इंसेन। सो बी ग्लैड टू सी द बैक ऑफ, राइट, ये भी उस टाइप का एक्सप्रेशन है, ये भी उस टाइप का एक्सप्रेशन है, राइट। सो इसको हम देखेंगे इसका मीनिंग क्या आता है। टू बी ग्लैड टू सी द बैक, राइट। अभी दिस इडियम मीन्स बी हैप्पी व्हेन अ पर्टिकुलर पर्सन leaves. Be happy when a particular person leaves, right? Its example, Manju has been a very strict boss. The juniors will be glad to see the back of her when she retires next week. Manju has been a very strict boss. The juniors will be glad to see the back of her when she retires next week. Okay, so this idiom basically means that लोग खुश हो जाएंगे, right? कि वो जब चले जाएंगे तो लोग खुश हो जाएंगे। To be happy when the person leaves, right? Okay. नेक्स्ट, सो इस इडियम को आप लोग थोड़ा ध्यान से याद रखिएगा, जस्ट बी स्मार्ट इनफ टू कीप इट इन योर माइंड। ओके, सो दिस वाज द 36th idiom. 37th idiom is against the clock. A nice one. Against the clock. ना क्लॉक अपने हिसाब से चलते रहते हैं, उसको आप ना फास्ट कर सकते हो, उसको आप ना स्लो कर सकते हो, हाँ कर सकते हो अपने घड़ी में, बट द जनरल क्लॉक विल रन अकॉर्डिंग टू इट्स टाइम. बट अगेंस्ट द क्लॉक दिस इडियम मीन्स rushed and short time. इसका एक बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल आज की डेट में हम लिख सकते हैं, विच इज द वैक्सीन मेकर्स और द वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स worked against the clock to
give the world the power to fight against COVID. So the vaccine manufacturer worked against the clock to give the world the power to fight against COVID. Right. There's another one which has a clock as a reference, round the clock. What does this idiom mean? इस idiom का meaning क्या है? Round the clock का मतलब होता है all the time. All the time. यानी घड़ी का किसी भी समय में, एंड इसका एग्जाम्पल होगा the hospitals or the hospital staff are facing serious challenges are facing serious challenges when they have to wear the PPT kit and work round the clock. The hospital staff are facing serious challenges when they have to wear the PPT kit and work round the clock. In a country like India, which is hot and humid, right? The doctors and the other staff in the hospital, उनको तो बहुत परेशानी हो रहा था, right? Okay. अभी थोड़ा ठीक हुआ है, अभी they are not wearing the PPT kit because COVID का infection अभी काफी weak हो चुका है, right? Though it is not over, but it has become very weak. 39 is an interesting idiom जो कि काफ़ी पॉपुलर है और बहुत लोग यूज़ करते हैं रिलेटेड टू अ कॉन्टेंट. डोंट जज अ बुक बाय द कवर. नाउ इसको हम क्या समझ सकते हैं? राइट, द बुक हैज अ कवर, but the cover might look very ordinary, the cover might not be very attractive. तो शायद ये बुक का स्टोरी जो है वो अच्छा नहीं हो. सो दैट इज समथिंग विद द इडियम यूज. सो इसको जब हम इडियोमैटिक एक्सप्रेशन में यूज करते हैं, उसको कैसे यूज करते हैं? वन शुड नॉट जज द वर्थ, यानी उनका वैल्यू ऑफ समवन by
her or his outward presence, यानी बाहर से देख के आप किसी को जज मत करो, राइट? उनको पहले जानने का कोशिश करो, ओके? तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? द स्टूडेंट doesn't always score high in his term exams. However, we should not judge a book by its cover. एक स्टूडेंट हैं आपका कॉलेज में, হয়তো টার্মিনাল এক্সামগুলোতে সে খুব ভালো করতে পারে না, কিন্তু তার অন্যান্য অনেক রকমের অ্যাবিলিটিস অ্যান্ড স্কিলস আছে, এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস, ভালো খেলাধুলো করতে পারে, তাই ভালো গান গায়, কলেজের যে কোনো ইভেন্ট হলে তখন ও টিম লিড করে এবং ইভেন্টগুলোতে সাকসেসফুলি প্রোগ্রামগুলো কন্ডাক্ট করে। সো আমরা খালি টার্মিনাল এক্সামের মার্কস দেখলাম, দেখে বললাম যে স্টুডেন্টটা ভালো। সো উই শুড নট জাজ এ বুক বাই ইটস কভার, রাইট? So it's very important that we don't judge the book by its cover. Next is 40. 40 says oddball. Oddball means what? Oddball means strange. Odd means something which is unusual. Odd means something which is unusual. इसका एग्जाम्पल क्या होगा? Though his training seem oddball, yet he has won the Olympic gold medal twice. यूजुअली जैसे बाकी लोग ट्रेनिंग करते हैं वो उस तरह से ट्रेनिंग नहीं करते, राइट? वो किसी दूसरे स्टाइल से ट्रेनिंग करते हैं विच इज़ नॉट यूजुअल, विच इज़ ए टिपिकल, राइट? सो स्ट्रेंज, ओके? येट ही हैज़ वन द ओलंपिक गोल्ड मेडल ट्वाइस. सो वंस अगेन हियर हम शायद डोंट जज द बुक बाय इट्स कवर को भी यूज कर सकते हैं, इसको भी हम यूज कर सकते हैं, बिकॉज वो हम उनका ट्रेनिंग एक बार देखने गए, वो कैसे अजब टाइप का चीज़ें कर रहे थे, तो हम उससे कंक्लूजन कर लेते हैं कि इससे कुछ नहीं होगा, बट ट्वाइस ही हैज वन द ओलंपिक गोल्ड मेडल, राइट? 41 is also very popularly used, knee jerk reaction. Knee jerk reaction means a quick and not thought out reaction. बिना सोच बूझ के कोई रिएक्शन करना is called a knee jerk reaction. The protest against the management right by
by the employees was a knee-jerk reaction. बिकॉज एम्प्लॉयज़ ने ठीक से जाना नहीं, समझा नहीं, मे बी उनका ग्रीवांस है उनका सैलरी को लेके या उनका फैसिलिटीज़ को लेके, जो कि कंपनी ने ऑलरेडी दे चुका है, बट फिर भी वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एम्प्लॉयज़ लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, विच मीन्स दैट इट्स अ नी जर्क रिएक्शन, विच मीन्स इट्स अ नी जर्क रिएक्शन. Next is hang in there. Hang in there means not give up. Not give up. लगे रहना. Right? Not give up. Just that your business is witnessing initial hiccups. Don't give up. Hang in there. Or you can remove this don't give up. You can remove this don't give up and you can just write hang in there. Just that your business is witnessing initial hiccups, hang in there. लगे रहो. ये धीरे धीरे ये सब जो इनिशियली हिकअप्स मीन्स प्रॉब्लम्स, ट्रबल्स, ये धीरे धीरे चला जाएगा. दिस विल गो. दिस विल गो. सो इट मीन्स हैंग इन देयर, यानी नॉट गिव अप. किक द बकेट, ये बड़े मजेदार ईडियम है. किक द बकेट. अभी ये जो किक द बकेट है, इसको हम अगर लिटरली देखते हैं तो हमें ये लगता है कि कोई बाथरूम में बकेट है, वो बाथरूम का जगह लेके रखा हुआ है, तो मैं नहाते जब गया तब देखा कि मैं बाथरूम में ठीक से नहा नहीं पाऊंगा, वो बकेट बड़ा डिस्टर्ब कर रहा है, तो एक लात मारा मैंने, उसको निकाल दिया, बाथरूम से बाहर फेंका, तो घर बीवी ने चिल्लाई ये क्यों. दैट इज द लिटररी मीनिंग. बट किक द बकेट का जो इडियोमैटिक एक्सप्रेशन है वो सुनने से आपको बड़ा मजा आएगा. इट इज टू डाई. इट इज टू डाई, मर जाना. राइट. ओके. इसका एग्जाम्पल क्या होगा? अनफॉर्चुनेटली द टैलेंटेड सिंगर kicked the bucket very early in his life. Unfortunately, the talented singer kicked the bucket very early in his life. यानी he passed away. कभी भी आप लोग do not use the word expire. मैंने बहुत लोगों को देखा हूँ बोलते हैं he has expired. My grandfather has expired. ये कभी मत बोलना. Expire is used with non-living items. The date
of the medicine has expired. With human being, you should never use expired. It is always passed away. Passed away. It is always moved on. Right? Okay. Or you can also use the simple term died. You can also use the simple term died. Never ever use expired. This is a very common mistake जो कि 99 out of 100% लोग करते हैं. Right? So, or you can use kick the bucket. Kick the bucket भी आप use कर सकते हो. Okay? This is a nice one which is used during challenging times. Pull yourself together. Pull yourself together. This means what? Calm down. Calm down. Right? Pull yourself together and you will understand why he is blaming you for the work not completed. Pull yourself together, right? And you will understand why he is blaming you for the वर्क नॉट कंप्लीटेड. आप पहले ही अगर गुस्सा हो जाते हो, चीखना चिल्लाना करते हो, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि वो क्यों आपको ब्लेम कर रहे हैं. राइट? जो काम खत्म नहीं हुआ है उसके लिए शायद उसमें कुछ रीजन हो, तो आप उसको सुधार ले सकते हो. सो पुल योरसेल्फ टुगेदर. ओके. So far, so good. Very commonly used idiom, right? This means things are going well till the present. अभी तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है. अभी तक सब कुछ बढ़िया चल रहा है. ओके. My preparation for entrances is so far so good. अभी तक वो बढ़िया चल रहा है. My preparation for entrances is so far so good. 46 is the literary meaning and the idiomatic meaning are very different. Right? Down to earth doesn't mean कि आप जमीन पे आ गए या सो गए या whatever, right? या गिर गए. Down to earth. Down to earth, the idiomatic meaning is sensible, realistic. Right? Very good example. Our ex-president Dr. APJ Abdul Kalam was a down-to-earth person. वो तो हमने देखे हैं कि डॉक्टर कलाम कितना सिंपल लिविंग करते थे.
इतना हाई थिंकिंग करते थे, राइट। सो आवर एक्स प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वॉज अ डाउन टू अर्थ पर्सन, बहुत ही सेंसिबल थे, बहुत ही रियलिस्टिक थे, और इसीलिए हम उनको अपना श्रद्धा और सम्मान के आंख से आज भी कदर करते हैं, राइट। सो दिस इज व्हाट इज डाउन टू। दिस वन इज अ वंडरफुल इडियम जो कि आपको सीख के रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर कहीं एग्जाम पे आता है तो आप उसको ठीक से हैंडल कर पाएंगे। एल्विस हैज left the building. Elvis has left the building. Right? This means ये idiom कैसे आया है? In the 70s, there was a pop singer. अमेरिका में एक पॉप सिंगर थे, विदेशी गाना गाते थे, जिनका नाम था एल्विस प्रिस्ले, और वो बहुत ही दुनिया भर में फेमस थे। तो वो शोज करते थे अलग अलग जगह पे, और उस शोज करते वक्त कोई एक शो खत्म होता है तो वो उस जगह से चले जाते थे। तो उसी से ये इडियम बना है, एल्विस हैज लेफ्ट द बिल्डिंग, राइट। इसका मतलब इज द इट्स ऑल ओवर। इसका इडियोमैटिक एक्सप्रेशन का मीनिंग है इट्स ऑल ओवर, इट्स ऑल ओवर, राइट। You woke up late. Elvis has left the building. राइट। अभी ये सेंटेंस मैंने जो लिखा है, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये नहीं है कि एल्विस प्रिस्ले कोई प्रोग्राम कर रहे थे और ये लेट उठे तो ये प्रोग्राम देख नहीं पाए। इट्स नॉट दैट। इसका मीनिंग ये है कि शायद मेरा दोस्त है, उनका कोई ऑनलाइन एग्ज़ाम था, तो उनका टाइम था 10 बजे से, तो वो 11:30 बजे उठा, तो वो एग्ज़ाम ख़त्म भी हो गया, एग्ज़ाम लॉक भी हो गया, राइट। तो तब मैं उनको बोला यू वोक अप लेट, एल्विस हैज लेफ्ट द बिल्डिंग, यानी वो एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है और कुछ करने का नहीं है, राइट। 48 इज curiosity kills the cat. Curiosity kills the cat. इसका मतलब क्या होता है? Being too curious can lead someone into trouble. इसको मैं आप लोगों को समझाता हूँ कैसे होता है। समझ लीजिए एक बिल्ली है, और वो जो बिल्ली है वो एक होल देखा जमीन पे कहीं पर, इन अ जंगल सिचुएशन, उसने एक होल देखा। उस होल में वो सोच रहा है कि कोई चूहा उगा होगा तो टाके धोरबो धोरे मेरे खाबो, और उसका क्यूरियोसिटी के वजह से वो होल के अंदर सर घुसाया, और जो सर घुसाया वहां पर एक जहरीला सांप था, एंड दैट पॉइजनस स्नेक उसको बाइट किया, एंड इट डाइज बिकॉज इट वॉज ओवर क्यूरियस, राइट। इसका एग्जाम्पल हम कैसे इसको यूज करेंगे सेंटेंस में, राइट। व्हेन रमेश tried to access the confidential
data of his office, the manager told him that curiosity kills the cat. ज़्यादा जानने का कोशिश मत करो, ये आपको ट्रबल में डाल सकता है, बिकॉज दिस इज कॉन्फिडेंशियल डेटा ऑफ द ऑफिस, जिसमें आपका कोई अधिकार नहीं है उसको एक्सेस करने का, राइट. द लास्ट टू idioms 49 is joined at the hip, right. To be exceptionally close to someone. ये idiom आया कहाँ से? यूजुअली हम लोग बोलते हैं कि कभी कभार देर आर ट्विंस बॉर्न, और ये जो ट्विंस पैदा होता है ये अलग नहीं होता है बिकॉज ऑफ सम डिफॉर्मिटी इन द वूम. भ्रूण में अगर कोई प्रॉब्लम होता है, और ज़्यादातर समय देखा गया है इनका हिप से ये जुड़े हुए रहते हैं, यानी नीचे वाला पोर्शन इनका सेम होता है, ऊपर वाला पोर्शन हिप से ऊपर द टॉर्सो जिसको बोलते हैं बॉडी का पार्ट, वो अलग होता है, सर अलग होता है, राइट, बट नीचे से. सो वहीं से ये इडियम जॉइंट एट द हिप बना है, जिसका कि इडियोमैटिक एक्सप्रेशन इज टू बी एक्सेप्शनली क्लोज टू समवन, राइट. इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे. इट सीम्स दैट Rohit and Joy are joined at the hip because they attend all events together. हर इवेंट में कॉलेज का, राइट, चाहे कल्चरल इवेंट हो, चाहे टेक्निकल इवेंट हो, जो भी हो, रोहित और जॉय एक साथ हर टाइम दिखता है. सो दैट्स द रीजन हमने बोला आर जॉइंट एट द हिप. द लास्ट इडियम इज elbow grease. Means hard physical effort. ये फैक्ट्री में जो लोग काम करते हैं वहाँ से ये इडियम ओरिजिनेट हुआ है. फैक्ट्री में मशीन्स होता है तो लोगों को झुक के मशीन के अंदर में घुस के उसके नीचे जाके काम करना पड़ता है. मशीन्स को मेंटेनेंस का, उसमें ग्रीजिंग ऑयलिंग, तो उसमें क्या होता है, सिर्फ हाथ में ग्रीस नहीं लगता है, पूरा एकदम जो फ्रंट आर्म होता है एल्बो, राइट, एल्बो तक वो चीज़ जाता है, राइट, ग्रीस लग जाता है, पूरा एकदम गंदा हो जाता है. सो एल्बो ग्रीस इज एन इडियम विच इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम देयर, जिसका मीनिंग बोल रहा है क्या, ना हार्ड फिजिकल एफर्ट, क्योंकि फैक्ट्रीज में जो लोग काम करते हैं वो बहुत हार्ड फिजिकल लेबर देते हैं, राइट. इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे. इट टुक क्वाइट सम टाइम it took quite some amount of elbow grease for the team
top of Mount Everest. लास्ट जो पार्ट है उनको बहुत मेहनत करना पड़ा माउंट एवरेस्ट में चढ़ने के लिए, राइट, फॉर द टीम टू रीच द टॉप ऑफ माउंट एवरेस्ट। तो हमने 50 बहुत ही अच्छा इडियम्स को हमने आज सीखा, एंड दिस इडियम्स विल अपीयर इन योर एग्जामिनेशन। इसके साथ और भी बहुत इडियम्स हैं, राइट। तो आप इडियम्स जो हैं उसको अच्छी तरह से पढ़ लें, अपने खुद का सेंटेंसेस बनाएं, राइट। दैट विल गिव यू अ बेटर ग्रिप एंड अंडरस्टैंडिंग ऑन दीज इडियम्स, जिसको कि जब आप एग्जाम में जो इस तरह का इडियम्स जब और यही सब इडियम्स अगर कुछ कुछ आता है, सो यू विल बी एबल टू confidently identify the correct answers in the MCQ format. Thank you very much. We will come up with another class very soon.